Hello and assalamu alaikum. Welcome back, students. I'm your Python instructor, and let's continue with the series on Python. पिछले lectures में हमने देखा था कि Python क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हमने उसका जो है वो एक इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल करना सीखा था, और उसमें हमने थोड़ी बहुत कोडिंग भी सीखी थी, लाइक बेसिक थिंग्स हम किस तरह से उसमें काम कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। बट बिफोर दैट वी विल सी व्हाई वी नीड वेरिएबल। सो what I will do, I will go with my previous example where I was working in, let me open the IDLE of Python। ये आपको पता है कि किस तरह से ओपन होती है। स्टार्ट में जाएं, टाइप पाइथन एंड हियर यू विल सी द IDLE, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल। सो लेट मी कंटिन्यू विथ माई प्रीवियस एग्जाम्पल। हमने देखा था 2 + 3, व्हेन वी एंटर इट वर्क्स, इट सेज इट्स 5, right? So when we are working in mathematics, and especially when we are working in algebra, we have the concepts of x and y. What the value of x and what the value of y? Okay, so we will bring the same concept in programming. For example, if I say x is equal to 2, okay, and y is equal to 5, or so on. So if I say x is equal to 2 and enter it, ठीक है। यहाँ पे जब आपने देखा कि हमने x इज इक्वल टू 2 लिख के एंटर किया है तो कोई भी आउटपुट नहीं आया। इन प्रीवियस क्लासेस विल वी आर गेटिंग के जब भी हम एंटर कर रहे थे तो कोई ना कोई आउटपुट आ रहा था, इसमें आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है 2 वो हम x में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम स्टोरिंग द वैल्यू इन अ वेरिएबल। नाउ वेरिएबल इज़ अ न्यू वर्ड। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? बेसिकली वेरिएबल जो है x जिसको हम कह रहे हैं, इट्स अ कंटेनर जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इट्स लाइक अ बॉक्स जिसमें आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, वेर यू कैन पुट योर वैल्यूज। सो वी आर स्टोरिंग 2 इन अ कंटेनर एंड नेम दैट कंटेनर इज x। हम इस कंटेनर को नाम दे रहे हैं x। ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट एनी नेम, यू कैन पुट इट XYZ ABC एंड सो ऑन, बट देर आर सम रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप नेमिंग कर रहे होते हैं वेरिएबल्स की। सो व्हेन आई से x इज इक्वल टू 2 एंड आई हैव एंटर्ड, कि आपने देखा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब मैं x लिख के एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। इट मीन्स के जो हमने 2 असाइन किया था वो x में ऑलरेडी आ गया है, राइट। इफ़ वी ऐड 3, सो इट शुड गिव अस द वैल्यू ऑफ 5, बिकॉज x जो है वो ऑलरेडी 2 है। इसमें अगर हम 3 ऐड करें तो लेट्स सी क्या जवाब आता है। तो x + 3 एंड इट्स 5, बिकॉज x में जो ऑलरेडी हमने वैल्यू स्टोर किया था दैट वाज 2। सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ओके, दैट वर्क्स। नाउ लेट्स सी if we have another variable. For suppose I am saying y is equal to 3, right? y को मैंने एक वैल्यू दे दी 3 and then I'm going to print x plus y. So what should be the answer? It is 5. क्यों? Because x is 2 and y is 3. So 2 + 3 is equal to 5, because here the value of x is 5, right? But my question is why we call them variable? जवाब बहुत easy है। Normally it means कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। The value of variable can be changed. So let's see if we can change the value of variable. Initially the value of x was 2. Here I am writing x is equal to 9. Okay, and just 9. So that's great, it's working. So another question,
इज डू वी नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल? क्या हमें वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है पाइथन में? द आंसर इज़ नो. In Python, you don't need to define the type, data type. It automatically detects what type of the value it is. Because in other programming languages, आपको टाइप डिफाइन करनी पड़ती है. अगर आप इंटीजरल वैल्यू दे रहे हैं तो आप इंटीजर डिफाइन करेंगे, अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू दे रहे हैं तो फ्लोट डिफाइन करेंगे, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे. बट हियर इन पाइथन इट कैन डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, सो दैट्स मोर ईजियर, राइट? सो अब हमने x की वैल्यू जो है वो 9 रख दी है, ठीक है. इफ़ वी टाइप x एंड प्रेस एंटर इट विल शो 9 because already we have stored that in our example. What if I type abc and run it? Let's see, if I type abc, it's a new variable, ठीक है, हमने इसको असाइन नहीं किया कुछ भी, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये हमें एरर देगा, और ये कह रहा है कि नेम ए बी सी इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये आपको बता रहा है क्योंकि ये आपने कोई डिफाइन ही नहीं किया, तो ये आपको जो है वो एरर दे देगा, ठीक है, बिकॉज डिफाइन नहीं है. व्हाट इफ़ आई एड x प्लस 10? सो x प्लस 10, व्हाट शुड बी द आंसर? x प्लस 10 इज़ 19. वाई इट्स 19? बिकॉज x हैज़ द वैल्यू 9 और उसमें हमने 10 ऐड कर दिया, तो दैट विल बिकम 19. ओके, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. लेट्स से 19 प्लस वाई. अगर मैं 19 प्लस वाई को ऐड करवाना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? 19 प्लस वाई, नो, ये एरर दे रहा है. एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि 19 जो है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ एन अदर ऑपरेशन, ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन. तो इस किस्म के आउटपुट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आप अंडरस्कोर लिखेंगे प्लस वाई. अब आप देखेंगे ये 22 बता रहा है. क्यों 22 बता रहा है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 3 एंड द आउटपुट ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन इज़ 19. सो 19 प्लस 2 इज़ 22, 19 प्लस 3 इज़ 22, राइट? सो to use the operation output of previous operation, you can use underscore and then you can write the other code, ठीक है. So it works, and that's quite amazing. Now you can see you can work with so many things in Python, right? So variable works with the numbers like integer, float and so on. But how about string? Can I use string with the variable? String is combination of characters. Like if you want to print your name, if you want to print your caste or something like that, तो क्या आप वो कर सकते हैं? Now of course you can. How you can that? Let's see. If I create a variable name and assign it, let's see, I'm writing Ahmed, okay, and you enter it. Now write name. Yeah, it works. Yeah, it's cool, it's working, right? So it means के ये आपका जो है वो काम कर रहा है. So what if you want to print a single character of any name? Like my name here is Ahmed and Ahmed has 5 characters, that becomes a string. But what if I want to print just A? How can we do that? For that, what you'll do, name, you will keep capital bracket 0 and you just enter it and it will print A. Now why 0? Because कंप्यूटर में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है, सीक्वेंस जो सीरियल नंबर या जो उसका नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. बिकॉज स्ट्रिंग्स को ये ब्रेक डाउन करेगा कि एरे में. एरे इज़ अ टॉपिक इन फ्यूचर क्लासेस दैट वी लर्न. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि नंबरिंग जो है वो ऑर्डर उसका वो 0 से स्टार्ट होता है. सो 0 पे है अहमद ए एंड देन व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट द लास्ट नेम एंड 0 1 2 3 4. 4 इज द लास्ट character, it will print D. But what if we write name and 5? Yeah, it will send you an error because ऐसा तो कोई कैरेक्टर है नहीं इस
ओके, सो वीडियो इज स्टॉप। सो ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं इस पे, ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिंट डिफरेंट characters from a name. So for this, this is enough. What you have to do, you have to practice all these operations, and then if you have any problem or any question, you can ask me, right? You have my contact and you have the access to comment section. आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो है इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं. इट्स वेरी इजी टू लर्न. I hope you have enjoyed today's lecture, and in the next lecture we will continue with the variables and other operations that we can perform using variables. It's very interesting, very easy, and very very useful to learn. Okay, so I hope that you will keep watching Technogenie. Do subscribe this channel, press the bell icon, and follow every update that is going to be posted in this channel. Okay, see you guys in next lecture. Till then, take care and keep learning.